Let's depreciate the topic of depreciation now. The last part that is remaining is the questions with reference to the depreciation. One point that I had left on the other day was downward revaluation first and upward revaluation later, right? We had already discussed the upward revaluation but not the downward revaluation. Now, if there is a case of in the case of subsequent revaluation, I'll just share the screen, just a moment. ICI is not going to depreciate the syllabus, beta. ICI is only going to appreciate it so that your knowledge gets appreciated. ICI अगर knowledge depreciate कर देगी तो तुम CA बनने के बाद में तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी गौरव? Yes, so we have, if there is a subsequent revaluation, if previously was the downward revaluation, previous was the downward revaluation to a particular point, and in subsequent one, in subsequent case, if the upward revaluation is less than the previous downward revaluation, the subsequent revaluation, if you'll observe, is less than the previous subsequent upward revaluation. क्योंकि subsequently भी अगर आप downward revaluation ही करोगे तो in that case again you will be debiting it to the P&L account. But previously you had done the downward revaluation, now you are doing the upward revaluation, but that upward revaluation is less than the previous revaluation, previous downward revaluation. In that case, the upward revaluation, upward revalued amount credited to profit and loss account. Did you get this? क्योंकि आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन ये पिछले वाले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन से कम है इसलिए. But if your subsequent upward revaluation is more than the previous downward revaluation, then to the extent of the previous downward revaluation, the amount of upward revaluation will be credited to P&L account. To the extent of previous downward will be credited to the profit and loss account, and the higher value, further value will be credited. दोनों क्रेडिट ही होने वाले हैं, but further value will be credited to what? To revaluation reserve account. Exact reverse of the previous situation that we discussed. Did you observe it? जब हमने प्रीवियस अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था और उसके बाद अगर हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यस, प्रीवियस लेक्चर का एग्जैक्ट उल्टा. अगर हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियस अपवर्ड रिवैल्यूएशन वी डेबिट इट टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. But if it is more than that, then in that case, to the extent of the previous revaluation, we debit it to the revaluation reserve, and excess amount we debit to the P&L account. यहां हम लोग उसका एग्जैक्ट उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी P&L अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं.
Am I right? Did you understand this point? Yes. So let's make a combined chart on this and then we'll go ahead. Shall I? अच्छा पहले ये लिख लो, बाद में combined chart बनाता हूँ मैं. I'll take the example on this first and then you go ahead. Let's say in 2020, 2018, asset was valued downward by rupees 80,000. All right. Yes, then too it will remain the same. The effects will remain same. Subsequent revaluation means the revaluation after the previous one. In 2020, asset revalued upward by rupees 50,000. Now in this case, understand the point. When you did the downward revaluation of the asset, at that time you must have passed the entry as profit and loss account debit to asset account by rupees 80,000 in the year 2018. Now in the year 2020, when you are doing the upward revaluation, this is against that downward revaluation first. And as the amount of upward revaluation is less than the previous downward revaluation, that's why that 50,000 will not be credited to the revaluation reserve account. That 50,000 will directly be credited to what? The profit and loss account. Am I right? So my entry for this will be entry for adjustment will be asset account debit 50,000 to profit and loss account 50,000. Correct? But if this is our case 1, let's say case 2, in 2020, asset revalued upward by rupees 1 lakh. एक पेटी. आपका प्रीवियस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था 80,000 रुपए का. अब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो 1 लाख रुपए का. तो 80,000 तक का जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था वो तो आप एडजस्ट कर दोगे बाय क्रेडिटिंग इट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. बट उसके ऊपर का जो आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन दैट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, दैट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. सो व्हाट विल द एंट्री बी? Asset account debit 1 lakh, क्योंकि असेट की वैल्यू तो पूरे 1 लाख से बढ़ानी है, to profit and loss account by rupees 80,000 to the extent of the previous downward revaluation, and to revaluation reserve account for the unrealized profit of 20,000. Did you understand this? चलो छापो पहले डायग्राम. मतलब आप थोड़ी थोड़ी मौत मर रहे हो तो डायग्राम, क्योंकि आपका वजन जो होता है वो किलोग्राम में होता है ना. Yeah, first write down. I'll just repeat it. So in the first case 30,000 rupees, प्रथमेश, जब तुम्हारा 80,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो P&L को पूरे 80,000 रुपए से डेबिट हो चुका था.
अब उसमें से तुम्हारा अपवर्ड 50,000 कर रहे हो तो 50,000 से ही क्रेडिट होगा। असेट की वैल्यू तुम 80,000 से वापस रिपीट नहीं बढ़ा सकते हो। Yes, we are trying to neutralize. That's what we did in the case of upward downward. But that has to happen. वो फीलिंग आना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट समझना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी समझना जरूरी है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो दैट इज बेसिकली फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। D/W डाउनवर्ड प्रथम। और टू द एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंट है। एक्सटेंड मींस एक्सपैंड करना और एक्सटेंट मींस तक, तब तक। Will not upward revaluation be anticipated income, so why we credit to P&L account and not directly to reserve? अरे क्रेस, वही तो मैंने कंसेप्ट समझाई ना बेटा। द अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी, ये पिछले ही रिवैल्यूएशन को, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। वो जो एंटीसिपेटेड लॉस था वो हुआ नहीं, तो उसको रिवर्स करना जरूरी है या नहीं? एंड फॉर दैट पर्पस वी फर्स्ट क्रेडिटेड इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये अगर फर्स्ट टाइम होता तो मैंने डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व को डाला होता। डिड यू अंडरस्टैंड इट? Unrealized profit, the profit that is existing but not realized, that is what you call as unrealized profit. नोशनल प्रॉफिट का कंसेप्ट बताया था मैंने। हाँ, वहां रियलाइजेशन कंसेप्ट लिख लो, आज कल भूल गए थे हम लोग। राइट डाउन रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इंप्लाइज, ठीक है, मैं रुकता हूं मैं। तू भी क्या याद रखेगी कैसे मास्टर से पाला पड़ा था। नहीं श्रीपाद, टाइटल ऑफ द कंसेप्ट बताता हूँ, रुक जा रुक जा।
Reasons for upward and downward revaluation. Market value change हो रही है. When the market value of the assets change, then in that case you need to do the revaluation. प्रथमेश ये मैंने परसों बताई हुई चीज है. When we started with the concept of revaluation. Yes, Vaishnavi. किंजल, जितना तेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो अपवर्ड कर, पहले तूने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया बराबर. Now when you are doing the upward revaluation, to the extent of your previous downward revaluation, you have to cancel the effect of that, and for that purpose, to that extent you will be debiting it to the P&L account, sorry, crediting it to the P&L account. And then the excess amount, if any, will be your unrealized profit, and therefore that will be credited to the revaluation reserve account. Acha, how we understand market value change हुई है नहीं? Because there are n number of benchmarks for the purpose of deciding what is the market value of the asset, and based on that the things are decided. This basically primarily apply in case of the long standing assets. Like this will never apply in plant and machinery, but this will apply in land and building. In that case, you will keep doing the revaluation of assets or not. देखो concept, realization concept. It is Prathamesh. यार तुम लोग ना एक चीज को पकड़ के बैठे हो. It is, I didn't say that it will apply only to land and building. I said it can be applied to any of the assets, but primarily, how do we decide is considering the benchmark of land and building. You can understand that concept. हाँ, वैष्णवी बराबर है. Write down realization concept. Prathamesh, even though you have charged the depreciation on your asset, but then also the market value of that can further go down or not. So in such case, you will be required to do further revaluation, downward revaluation in such cases. Are you not able to understand that point? Revaluation के बाद depreciation कैसे करेंगे? On the new value. Prospective change मैंने सिखाया है तुमको concept. And in that case, I have already talked about the concept of prospective change, Mr. Prathamesh Gaikwad. From there only we started with the revaluation concept, if you remember. Matching principle won't get violated because the revaluation of asset is permitted as per accounting standard 10, property, plant and equipment itself. Shall I go ahead? Shall I start talking about the realization concept? Prathamesh Gaikwad, तेरे खत्म कर ले questions पहले. I'll wait. भले इतना वेट करने के बाद भी मेरा वजन चेंज नहीं होगा. हाँ, लिखो realization concept. हाँ, मैं गीला भी नहीं होएगा, बराबर है. मृदुला होशियार हो गई बच्ची अब हमारी. This concept implies that one should recognize only such profits into the business in the business
which are already realized. Full stop. A profit existing in the value of a transaction a profit existing in the value of a transaction a profit existing in the spelling बोलूं value of a spelling बोलूं a transaction but not recoverable Prathamesh, I don't remember beta, but not recoverable is an unrealized profit or notional profit. Is an unrealized profit or notional profit. Next line, write down the example on that. Example, एग्जाम में याद आने वाले पल. एग्जाम्पल, नोशनल का स्पेलिंग NOTIONAL, नोशनल, नोटियोनल. अरे नेशनल का बंगाली वर्जन, एब्सोल्युटली करेक्ट अथर्व. नोशनल होता है रे वो, नोशनल नहीं होता है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन. नेशनल में ओ लगा दोगे तो एक ही जगह ओ लगाओ, नोशनल हो जाएगा. नाश कर रही है तू खुशी. नोशनल का स्पेलिंग ऐसे लिखेगी तो भगवान भला करे. भगवान सच्ची में नोशनल नोशनल कहते कहते तुम्हारे नशे हो गए यहाँ पे. Yes, let's come back. Example, if the shares in a company are purchased, if the shares in a company are purchased for rupees 500 per unit, for rupees 500 per unit on 5th November 2020, and its market value has gone to, and its market value has gone to 700 rupees per unit, market value has gone to 700 per unit
On 9th November 2020, वो ट्रम्प तात्या की जगह पे बाइडेन अंकल आ गए इस वजह से पर यूनिट comma in this case rupees 200 is an unrealized profit. Biden Anna, rupees 200 is an unrealized profit till the time the shares are actually sold. Till the time the shares are actually sold. Did you get that? Realization concept palle pada? Yes. Now I'll make a combined chart on revaluation to finish off this concept. Revaluation. First time upward credit to revaluation reserve. Downward debit to profit and loss account. Am I right? Subsequent upward directly credit to revaluation reserve. Yes or no? Downward again in that case two branches up to previous upward debit to revaluation reserve. Excess in excess of previous upward debit to P&L account. बराबर है? Whereas if the previous was downward, then subsequent downward मतलब वापस से पहले भी डाउनवर्ड किया था अब वापस से डाउनवर्ड कर रहे हैं. In that case what we will do? Directly debit to profit and loss account है ना. Whereas अगर हमने अपवर्ड किया, पिछली बार डाउनवर्ड था अभी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, in that case
to the extent of previous downward credit to P&L account. And if it is in excess of previous downward, what will you do? You'll credit it to what? Revaluation reserve account. बराबर? कंसेप्ट पल्ले पड़ी या नहीं? On a consolidated basis, I have tried to clarify it. चलो छापो फाइल. आईसीआई मॉड्यूल में भी छपी हुई है ये कंसेप्ट, बट आईसीआई मॉड्यूल और हमारे समझने के बाद की भाषा उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है. Isn't it? वो जो आईसीआई मॉड्यूल पढ़ के आते हैं उनको ज्यादा समझ आता है. स्क्रीन जूम आउट करके फुल चार्ट दिखाऊं? ये स्क्रीनशॉट लोगे तुम लोग? बहुत होशियार मेरे बच्चे ना. ऐसे आज की जनता ना, तुम भले स्क्रीनशॉट ले लो पर लिखना जरूर तुम्हारे बुक्स में. लिख लिया अथर? वाह, गुड बॉय. तू बचपन से इतना गुड बॉय है. तू तो गुड नहीं गुडेस्ट है. सारे लेक्चर कल शाम के लेक्चर के बाद अपलोड होंगे. अच्छा, ओम बेस्ट होता है वो? अच्छा नहीं यार, हम लोग गांव में सीखते हैं ना इंग्लिश. गांव में हमको इंग्लिश भी हिंदी में सिखाते थे, तो इसलिए हम लोग जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं. बर जगताप, कळलं बरं का मला. पण मराठीत बोलण्याची मज्जा आहे ना ती इंग्रजीत नाही. ये तुम लोग क्या मेरे को मदारी समझते हैं किधर? सर जूम आउट करो, जूम इन करो. क्या टाइम पास लगा रखा है. इतना छोटा सा कैसे दिखता है तुमको स्क्रीन पे? अच्छा तुम जूम करते. लय भारी. हाँ चलो then, that's it for the day. We'll meet tomorrow. Thank you.